Friends, we shortly discuss about the level of prevention. Firstly, we know what is the level of prevention. Uh, we will see a little bit introduction. What is the level of prevention? The ultimate goal of healthcare service are to promote and to protect the health, to alleviate and minimize suffering and disabilities, and to regain the health. So, to lead socially useful and economically productive life. Preventive approach is the best approach to achieve this goal because the preventive measure can implemented with the joint efforts of health personnel and the people at large at the family and community level. Then we will see definition of prevention. Prevention is action to aim at eradicating, limiting, or minimizing the impact of disease and disability. In that, what are the level of prevention? The first is the pre-morbidity prevention, second is the primary prevention, and secondary prevention, and tertiary prevention. There are four type of level of prevention. In that, what are the intervention of prevention or prevention? First is the primordial prevention. In that, what we intervention give individual education and mass education. इसमें जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है इसमें क्या करेंगे अपन जो रिस्क होती है वो रिस्क देखेंगे और उसमें अपन जो इंडिविजुअल एजुकेशन होता है और मास एजुकेशन होता है मास एजुकेशन है तो वो अपन प्रोवाइड करेंगे बाद में देखेंगे कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है तो जो प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी deep needs as action taken prior to the onset of disease with remove the possibility that disease will be ever occur. तो इसमें जो होता है कि जो डिसीज की पॉसिबिलिटी है वो डिसीज होना नहीं चाहिए उस पर अपन ज्यादा फोकस करते हैं तो उसमें क्या करेंगे अपन कौन सा इंटरवेंशन देंगे तो इसमें अपन हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इन दैट हेल्थ प्रमोशन वी सजेस्ट अपन सजेस्ट करेंगे उनको कि एक्सरसाइज करना है मेडिटेशन करना है म्यूजिक थेरेपी ने जो भी ऑल थेरेपीज और ले और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या कर सकते हैं अपन कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो जैसे कि वैक्सीन हो गया अगर कोई भी डिसीज होने के चांसेस है और अपने को लगता है कि वो डिसीज वो जो इनमें से अपने को होने वाली है तो अपन क्या करेंगे कि उसका जो वैक्सीन है वो वैक्सीन ले लेंगे ये अपने को पता है कि कोई भी जो बैक्टीरिया होता है जो वायरस होता है उसका जो पीरियड होता है वो कुछ दिन का होता है जैसे कि 15 डेज हो गया 7 डेज हो गया तो उसका जो ड्यूरेशन वो ड्यूरेशन होता है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं उसको अपन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और हेल्थ प्रमोशन इसमें कर सकते हैं अपन जैसे कि उससे अपन क्या हो सकते हैं क्योर हो सकते हैं अपन वो प्रिवेंट कर सकते हैं तो ये हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन देन वी विल सी व्हाट इज द secondary prevention. In that secondary prevention can be defined as action which halt the process of diseases and its incipitent stage and prevent the complication. Secondary prevention is a second level and is associated with the pathogens, pre-symptomatic stage and symptomatics, the clinical stage of pathogenesis phase of disease process. The secondary prevention is a more important and emphasized in some chronic and non-infectious diseases such as diabetes, cancer, blood pressure. It's because there is a limited knowledge of cause of primary prevention. The objective of secondary prevention measure diagnosis the disease early stage. In that, what are the prevention, what are the intervention we will give next? तो अर्ली डायग्नोसिस करेंगे जो भी डिसीज होगा उसमें अपन क्या करेंगे कि उसमें अपन डिसीज तो होने का है पर अपन क्या करना है अपने को कुछ साइनल सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो उसमें अपने को क्या करना है कि जो भी टेस्ट है वो टेस्ट करके अपने को जो डिसीज है या इलनेस है उसको अपन डायग्नोस करेंगे तो एज सुन एज पॉसिबल जो भी टेस्ट है अपन वो टेस्ट करेंगे और बाद में उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट अर्ली डायग्नोसिस के बाद में उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रॉम्प्ट करेंगे सही समय पे करेंगे then next we will see tertiary prevention what is the tertiary prevention in that tertiary prevention we will see tertiary prevention it is
what intervention we will give: disability limitation and rehabilitation. This is the last step of the prevention, tertiary prevention. Tertiary prevention can be differ head as all measure available to reduce the limit of impairments and disability, minimize suffering caused as existing departures from a good health, and promote the patient adjustment to a remedial condition. The tertiary prevention is the third level of both have prevention. It is occur in the pathogenesis stage. This is when the irreversible changes is either in anatomy or physiological occur. At this point, the disease process is advanced clinical stage and enter in the डिसेबिलिटी स्टेज। तो देखिए ये जो लास्ट वाला प्रिवेंशन है टर्जरी प्रिवेंशन, ये सबके बाद में आता है। तो फर्स्टली भी ऑल प्रिवेंशन, जो भी प्रिवेंशन है, ये प्री मॉर्बिड प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्जरी प्रिवेंशन, ये सभी प्रिवेंशन अपन फर्स्टली क्या करेंगे, करके देंगे। और बाद में जो लास्ट होता है वो टर्जरी प्रिवेंशन होता है। तो इसमें डिसेबिलिटी लिमिटेशन, जो भी डिसेबिलिटी है उसको अपन प्रिवेंट करेंगे। और जो भी पर्सन है जिसको भी वो डिसऑर्डर से सफर हो रहा है उसको अपन रिहेबिलिट करेंगे, उसको अपन जो भी जो भी स्टेज हो चुके हैं उसको अपन रिगेन करेंगे, उसको अपन रिकवर करेंगे। तो ये है पूरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इन दैट व्हाट वी सी कि जो प्रीमॉर्बिड प्रिवेंशन होता है उसमें अपन इंडिविजुअल एजुकेशन और मास एजुकेशन देंगे। देन प्राइमरी प्रिवेंशन में अपन हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देंगे। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन में अपन अर्ली डायग्नोसिस करेंगे और उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करेंगे। फिर टर्शियरी प्रिवेंशन में अपन डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन करेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।